conference will now be recorded. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, आदाब, हेलो, रमज़ान मुबारक। लेकिन ये मुबारक सुप्रीम कोर्ट की जो फैसला आया है वो मुबारक बात है या नहीं, तो यही हमारी चर्चा है आज। सुप्रीम कोर्ट ने कल ज़बरदस्ती टीका नहीं लगा सकते आप नागरिक को, उनको जानकारी होनी चाहिए, इस तरह की वो काफ़ी बड़ी लंबी एक उन्होंने जजमेंट दिया है। उसका फलस्वरूप आज हमारा लाइव शो, क्या ये लीगल वैक्सीन्स, हमने कहते हैं कि हमारी न्याय व्यवस्था को क्या लीगल वैक्सीन की ज़रूरत है, क्योंकि लोग बोलते हैं ना देर है लेकिन अंधेर नहीं। लेकिन जब स्वास्थ्य की मामला, निजी स्वास्थ्य की मामला होता है तो देर हुए तो गए ख़त्म। जब हमने पोस्टर अनाउंस किया है तब से काफ़ी लोग हमें कॉल कर रहे हैं, सर आप ये शो, इसमें ये सब कुछ बता दीजिए। अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला जल्दी करता, क्योंकि 13 मेरे ख्याल से मार्च या 221 की जो ये एक बिल के द्वारा किया गया था, लेकिन उसके पहले भी हम रोज़ अक्सर लिखते हैं सुप्रीम कोर्ट को, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर सभी को आधार के साथ, क्या ज़रूरत है वैक्सीन्स की और वैक्सीन्स में क्या है, क्या आपने वायरस को आइसोलेट किया है। इसीलिए ये लोग जैसे ही हम पोस्टर अनाउंस किए, आप ऐलान कीजिए, काफ़ी कीमती जाने चले गई। ये सुप्रीम कोर्ट इसका जवाब देना ही पड़ेगा। इसीलिए हम कहते कि देर है लेकिन अंधेरी नहीं, काफ़ी जाने गए हैं। और अभी भी लोग ये फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, that is what is there in the legal parlance. Is it not true? After we announced the poster, people were calling me, they were expressing so many things. Had this decision been early, many lives could have been saved, because it created fear, it created panic. They do not know what coronavirus is, what vaccine is, and what treatment remdesivir and all. When the people who were hospitalized, some brilliant minds in software and all, have just come to know they lost their lives. Very sad. That is why justice delayed is justice denied. That is why the apt topic, legal vaccines should it be given to our own judicial system. How can you delay? You can postpone. You only say procrastination is the thief of time. Then how can the trial go on eternally for such a long time? Delaying tactics. Kasab gets trial. Kasab gets trial. Principles of natural justice. The people who are very close to the power, midnight hearings have been heard, they have been granted bail. When it matters the health of the citizens of India, such a delay, judges, I salute and I do my pranams. That is why this show is very much important. And we have wonderful guests in P.N. Arunkumar, ever ready, a senior attorney. I will not relegate him to High Court. No, he is beyond that, because the way he tries to understand an issue in the legal perspective and simplifies it to the common man, hats off to him. And again, Thank you, sir. very senior in my profession, right from the day we started this channel, he was there. Sir, आप बताइए, because he is double MD, Dr. Amar Singh Azad from Punjab. When the wave after wave was going on, I asked, Doctor Sahab, हम तो नहीं पढ़े, आप पढ़ाइए हमको. He is MD in Pediatrics and MD in Community Medicine. Sir, what is this wave, sir? I am not able to understand. ये wave आता है एक उम्र को, एक age, one age group, this wave affects, the another wave it affects in another age group. क्या sir, is virus tutored? Is it been man-made? Now it is coming true. This virus is tutored, man-made. And is it not true now?
ప్రెషియస్ లైఫ్స్, చాలామంది అమూల్యమైనటువంటి ప్రాణాలు కోల్పోయారు. న్యాయ వ్యవస్థ ఇంత ఆలస్యంగా తన ఖచ్చితమైనటువంటి ఆధారాలు వారి దగ్గర ఉన్నా వారు అవతలి వారికి కూడా సమయం ఇవ్వడం, తద్వారా విచారణ పేరిట 2021 నుంచి ఈరోజు నిన్న మే 2వ తారీఖు వారు సుప్రీంకోర్టు న్యాయ వ్యవస్థ టీకాలు, బలవతపు టీకాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అని ఇంత లేట్గా చెప్పడాన్ని, ఆ లోతు ఇంకా ఏముంది సబ్జెక్ట్ రేపటి షోలో మనం చేద్దాం. ఇది ఎంతవరకు న్యాయం? చాలామంది అమూల్యమైనటువంటి ప్రాణాలు కోల్పోవడం జరిగింది. దీనికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారని వాళ్ళు ఈరోజు నాకు కాల్ చేసి చెప్తా ఉన్నారు. మంచి మేధావులు భయంతో హాస్పిటల్కు పోయి రెమెడీసివిర్ అని, ఆ మందులు ఈ మందులని, డ్రగ్ ట్రయల్స్ మందులు వారిపై ప్రయోగించారా లేదా? వారి ప్రాణాలకు ఎవరు భరోసా? సుప్రీంకోర్టు ఎమర్జెన్సీ యూజ్ ఆథరైజేషన్ నా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టినా నాకు సమాచారం లేదు. చనిపోయిన వారికి 50,000 కంపెన్సేషన్, నష్టపరిహారం 50,000 నా డబ్బులే. సుప్రీంకోర్టు హ్యాస్ allowed emergency use authorization because of which money is spent on vaccinations in the name of prevention, and they were paying 50,000 for unfortunate souls who lost their lives instead of insurance companies on the name of corona. But where is the evidence? Where is the autopsy? Where is the postmortem report? Presenting symptoms. What are the presenting symptoms? Why did they give remdesivir and all? And again remdesivir is withdrawn. And vaccines, under trial vaccines, how could trial vaccines be allowed under emergency use authorization, allowing my money? I have a case because my money is spent. हमारा पैसा है ये, మన డబ్బు. ఏ పొలిటికల్ పార్టీ ఎవడో ఇండస్ట్రియలిస్ట్ కాదు, మన డబ్బు అక్కడ పెట్టినప్పుడు నాకు సమాచారం ఎందుకు లేదు? नागरिक को सही समाचार क्यों नहीं है? Why there is no proper information to the concerned citizen when he is spending his own money? So that is why this discussion is very, very important. PN Arunkumar-ji, I'll start with you before I ask Dr. Amar Singh Azad ji as to why and how can you postpone an health issue, and why there is no discussion. What does these vaccines contain? What does these medicines contain? What is COVID-19 virus? Did you isolate? How genuine these RT-PCR tests are? Once again, you have to come back to the same. Yes, Arunkumar-ji. Sir, 1950 January 26th, Constitution came into force. ఆ తర్వాత ఏ వచ్చినా కూడా, ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ పోస్ట్స్ వచ్చినా కూడా, ఆల్ ఆర్ బౌండెడ్ టు టేక్ ఓత్ ఆన్ కాన్స్టిట్యూషన్. మేబీ ఇల్యూజనరీ ప్రెస్ కూడా ఒక పిల్లర్ అయినప్పుడు, అవుట్ ఆఫ్ 4 పిల్లర్స్ జ్యుడిషియరీ కొద్దిగా ఎక్కువనే వర్క్ చేసింది. బియాండ్ ద లిమిట్స్ మిగతా గవర్నమెంట్ని, లెజిస్లేచర్ అయితే పూర్తిగా ప్యారలైజ్ అయిపోయింది. ఎవరు ఎక్కడ కూడా అసెంబ్లీ సమావేశాలు లేవు, పార్లమెంట్ సమావేశాలు లేవు. అదే జ్యుడిషియరీ ఏ ఓవర్ ఎంతూజియాజం, ఆబ్వియస్లీ ఐ కెన్ సే, చూపించిందో అర్జెన్సీని. అంటే ఇక్కడ జ్యుడిషియరీ లాస్ట్ ఇట్స్ డిస్క్రిషన్ టు ఐసోలేట్ ది కేసెస్, అర్జెన్సీ కేసెస్, నాన్ అర్జెన్సీ కేసెస్. అర్జెన్సీ కేస్ ఇది కదా. కేవలం మనం ఫస్ట్ డే నుంచి మనం మాట్లాడుకున్న ఒక్కటే ఒక విషయం, యువర్ సెల్ఫ్ యు ఆర్ అలౌవింగ్ ఫారిన్ బాడీ ఇన్ టు యువర్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వ్యాక్సిన్. అంతే కదా సార్? యువర్ సెల్ఫ్ యాక్సెప్టింగ్. దానికి శాస్త్రీయత లేదు, దానికి ఒక కులమానం లేదు. వాట్ ఈస్ ది కంటెంట్? మనం డిస్కస్ కూడా చేసినాం. వాట్ ఈస్ ది కంటెంట్ ఇన్ యూజింగ్ ది వ్యాక్సిన్? అదొక బ్రహ్మ పదార్థం అయిపోయింది. దాన్ని తీసుకొని వచ్చి ఒక పారామీటర్స్ ఉన్నాయి. ప్రయర్ టు 2020 వ్యాక్సిన్ డిజైన్ చేయడానికి ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ 2.5 years. దాని క్లినికల్ ట్రయల్స్కి పోవాలా, అవన్నీ కూడా స్కిప్ చేసి విత్ ఇన్ ఏ స్పాన్ ఆఫ్ 3 to 4 months దాన్ని యూసేజ్లకు తీసుకురావడం, దాని జెన్యూనిటీని చెక్ చేయకపోవడం, జనాలను ప్యానిక్లో పెట్టడం, లాక్డౌన్ ఉపయోగించుకోవడం, అన్ని విభాగాలను క్లోజ్ చేయడం, ఎఫెక్టివ్గా అర్జెన్సీ కేసులను ట్రై చేయాల్సిన బాధాకరమైన విషయం ఏంటంటే ఆ విభాగం పూర్తిగా ప్యారలైజ్ అయిపోయి అసలు కేసును పక్కకు పెట్టేసి వైరస్ జెన్యూనిటీని, వైరస్ ఎఫెక్టివ్నెస్ని, వైరస్ వల్ల
ఏదైతే వ్యాక్సిన్ వల్ల వైరస్ ఏదైతే కంట్రోల్ అవుతుందా కాదా అనేది చెక్ చేయకుండా పక్కకు పెట్టి ఒక బ్లాంకెట్ గా గవర్నమెంట్ కి గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇవ్వడం వల్ల ఈ రోజు డెఫినెట్ గా వి లాస్ట్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్, ఎమినెంట్ పీపుల్, జాతికి ఉపయోగపడి స్టేట్ ఎక్స్చెక్కర్ ని జనరేట్ చేసే వ్యక్తులను మనం పోగొట్టుకున్నాం. పానిక్ క్రియేట్ చేయడం. స్టార్ హాస్పిటల్స్, ఐఎమ్ నాట్ అంటే స్టార్ అంటే 5 స్టార్ 3 స్టార్ అట్లాంటి హాస్పిటల్స్, నేను మళ్ళీ బ్రాండ్ నేమ్ మీదకి పోవట్లేదు, మళ్ళీ స్టార్ హాస్పిటల్ మళ్ళీ బాధపడితే కష్టం, దానికి సంబంధం లేదు విషయం. వాళ్ళు డేస్ టుగెదర్ సెడేషన్స్ ఇచ్చేసి నిద్రమత్తు మాత్రలు సెలైన్ ఇచ్చేసి పడుకోబెడితే రిజర్వ్ ఫుడ్ ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది సార్ బాడీకి. ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత 10 రోజుల తర్వాత సెలైన్ ఎంతవరకు కంట్రోల్ చేస్తుంది అసలు చెప్పగలుగుతాడా ఒక వ్యక్తి? నిద్రలో ఉన్న వ్యక్తి లేసి నాకు ఆకలి అవుతుంది, ఆహారం కావాలి, పూర్తి స్థాయిలో ఎగ్జాస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ గా ఆయన కాన్షియస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక ఇడ్లీనో పూరీనో పెడితే డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ మొత్తం అతుక్కుపోయింటాయి కదా, పేగులు కావచ్చు ఏవైనా కానీ, మల్టిపుల్ ఆర్గాన్ ఫెయిల్యూర్ ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. అక్కడ నుంచి కళ్ళు తెరిచి చూసినప్పుడే ముందు బెడ్ మీద ఒకరు, పక్క బెడ్ మీద ఒకరు, ఇక్కడ ఒకరు హార్ట్ ఫెయిల్యూర్తో చనిపోవడం, ఇవన్నీ కూడా డిస్కస్ చేసినాం మనం. ఈ విషయాలని ఏవి కూడా టచ్ చేయకుండా మరి వాట్ ఈస్ ద బిహైండ్ ఇన్ మెయింటైన్ సైలెన్స్ స్టిల్ 2 years, ల్యాప్స్ ఆఫ్ 2 years. ఎందుకు ఆ జడ్జిమెంట్ మళ్ళీ ఇవ్వడం? దాన్ని జెన్యూనిటీని మీరే డిసైడ్ చేసుకోండి, మీకు ఇష్టం ఉంటే తీసుకోండి, లేకుంటే లేదు. ఇదే మాట ముందే చెప్పింటే చాలా మంది దాని జెన్యూనిటీ అవసరమైతే పానిక్ అయిపోయినారు, కొన్ని వేల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారు. సైన్స్ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ టు బ్రాడ్ to complete the medical jurisprudence to the judges. It is mandatory now. Medical jurisprudence complete చేసుకున్న వ్యక్తినే జడ్జిగా అపాయింట్ చేయాలని I am demanding. Wonderful. Not only that, we have such very good people like Dr. Amar Singh Azad. He is a double MD, Pediatrics as well as community medicine, and he's practicing medicine. Anyone can watch him he's very close to Delhi also. They should have solicited such opinions from him, or so they could have appointed such people who are not biased, who speak science, and who believe only in truth, because it is matter of health, sir. Health, how can you have trial and error method cannot be done in health. The tree of judiciary is accepting all the graduates from nook and corner, allowing to complete the LLB and allowing the persons of different graduates to complete the LLB and to allowing into practice. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో యాక్చువల్గా మెడికల్ టచ్ ఉన్న సైన్స్, లైఫ్ సైన్సెస్ టచ్ ఉన్న వ్యక్తులను అసలు ఐడెంటిఫై చేయట్లేదు, వాళ్ళకి అవకాశమే ఇవ్వట్లేదు. మన LLB కంప్లీట్ చేసుకొని వ్యక్తులు బార్ కౌన్సిల్లో ఎన్రోల్ అయితే వాళ్ళను లెర్నడ్ కౌన్సిల్స్ అంటారు. మళ్ళీ లెర్నడ్ కౌన్సిల్ కి సైన్స్ రానప్పుడు, లెర్నడ్ కౌన్సిల్స్ ని జడ్జెస్ గా అపాయింట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు సైన్స్ టచ్ లేనప్పుడు, వాళ్ళకు వ్యాక్సిన్ అంటే తెలియనప్పుడు, ఆ కాంబినేషన్స్ తెలియనప్పుడు, కనీసం ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది అమైకస్ క్యూరీని అపాయింట్ చేసుకోవడానికి. అమైకస్ క్యూరీని కూడా అపాయింట్ చేసుకోలేదు, ఇక్కడ ఏ కోర్టులు చేసుకోలేదు. నాట్ ఓన్లీ ఫస్ట్ బ్లాంకెట్ ఆర్డర్ ఇవ్వడం జరిగింది, no high court is entertained to touch the vaccine cases. The Supreme Court directed all the high courts to transfer all the cases with regard to the coronavirus is to be transferred to Supreme Court. Supreme Court is entitled to examine the cases only. తర్వాత 1 month తర్వాత మీరు కూడా చూసిండ్రు, రెమిడిసివిర్ ప్రయత్నాలు, ఆక్సిజన్ సంబంధించిన కేసెస్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ సెగ్రిగేట్, మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యి, directing all the high courts to exercise your case, and herewith we are disbursing the whatever the cases from the high courts is empowered to entertain the cases. మరి ప్రయారిటీ బేసిస్ లో ఆక్సిజన్ నిల్వల మీద కావచ్చు, ఆక్సిజన్ అవసరాల మీద కావచ్చు, రెమిడిసివిర్ మీద కావచ్చు, వ్యాక్సిన్స్ మీద కావచ్చు,
ఎగ్జామిన్ చేయడానికి అమైకస్ క్యూరీని కూడా అపాయింట్ చేసుకోలేదు, ఒక సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్ ని కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోలేదు. ఇక్కడ నుంచి మన డ్రగ్ ఇండస్ట్రీ నుంచి కూడా ఎవరిని పిలవలేదు. ఎవరిని పిలవకుండా సింపుల్ గా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఏవైతే సజెస్ట్ చేస్తున్నారో, WHO ఏదైతే డైరెక్షన్స్ ఇస్తుందో, ఆ WHO కూడా విచిత్రంగా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ బికమ్స్ వర్స్ట్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ఫర్ ది వెల్ఫేర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆఫ్ 700+ crores of entire people. We lost your sound, Arunji. These things will start now. Once you touch WHO, I think they will start playing tantrums. Yeah. వీళ్ళ ఫేట్ ని ఒక పిచ్చోల చేతిలో పెట్టినట్టు అయింది వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. వాడు ఎటు తిప్పితే అటు హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో ఎక్స్పెడైట్ గా డిస్పోజ్ చేయాల్సిన కేసును వ్యాక్సిన్ అవసరమా కాదా అని డిసైడ్ చేసుకుని డిస్క్రిషన్ ని ఉపయోగించుకునే ఆపర్చునిటీని సిటిజన్స్ కి ఇవ్వకుండా వాళ్ళను ఫోర్స్ఫుల్ గా గవర్నమెంట్ కి అవకాశం ఇవ్వడం, వాళ్ళు పానిక్ లో దే స్పెండ్స్ మోర్ దెన్ ₹1,00,000 ఫర్ ఎ వ్యాక్సిన్. ఈ విచిత్రం అనిపించింది. అంటే తన చావు తానే రాసి పెట్టుకున్నాడు. ₹1,00,000 పెట్టి వ్యాక్సిన్ ఇచ్చుకుని తర్వాత దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ ని ఫేస్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఒక బీయింగ్ ఒక అరుణ్ కుమార్ గారు, ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్ డిస్టర్బెన్స్. గ్రాడ్యుయేట్ గానీ ఒక డాక్టర్ గానీ ఎప్పుడు కూడా యాంపుల్ గానీ వ్యాక్సిన్ గానీ ఎలా తీసుకోవడం అంటే డైరెక్ట్ బ్లడ్ స్ట్రీమ్ లోకి తీసుకోవడానికి ఇష్టపడరు. దాని కాన్సిక్వెన్సెస్ దానికి ఉంటాయన్న విషయం అందరికి తెలుసు. కేవలం డిస్టిల్ వాటర్ ను కూడా బ్లడ్ లోకి తీసుకోలేనప్పుడు ఒక వైరస్ అవశేషాలతో కూడిన వాటిని ఏ విధంగా తీసుకుంటారు? అది కోర్టులు ఎగ్జామిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నప్పుడు కూడా. సార్ గ్రాప్ వచ్చిందా సార్? Yeah, మధ్యలో I think there is some disturbance. As soon as you touched the word of WHO, I think they were trying to disconnect. Now you are clear now. Now the panic is being given back to WHO and all this ICMR and all YouTube, Twitter now. Yeah. సార్ Will. నేనే కనీసము అవుట్ ఆఫ్ ఫుల్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక 30 మెంబర్స్ ఉన్న హైకోర్టులో అట్లీస్ట్ 3 మెంబర్స్ ఫ్రమ్ మెడికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉన్న వాళ్ళు, లైఫ్ సైన్సెస్ కంప్లీట్ చేసుకున్న గ్రాడ్యుయేట్స్ నుంచి వచ్చిన అడ్వకేట్స్ కి అలౌ చేస్తే డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జ్ వైపు నుంచి వచ్చిన హైకోర్టు జడ్జ్ అయినా సరే లీగల్ గా ఒక గ్రాడ్యుయేట్ అడ్వకేటే. తర్వాత హైకోర్టులో ఉన్న సెలక్షన్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో కొలీజియం నుంచి ఎలివేట్ చేసే సిస్టమ్ లో కూడా 60% కొలీజియం నుంచి వస్తారు. వాళ్ళనైనా సరే ఒక సైన్స్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గ్రాడ్యుయేట్ ని అకామిడేట్ చేసి సైన్స్ ఇష్యూస్ వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ముందు ప్లేస్ చేసే అవకాశం ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే సైన్స్ స్టూడెంట్స్ ఒక పద్ధతి ప్రకారం వాళ్ళు చదువుకుంటారు. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దాన్ని ఆ కోణంలోనే చూస్తారు, ఆ కోణంలోనే డిస్పోజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు. వాళ్ళకి కదా ఆపర్చునిటీ ఇస్తే వాళ్ళకి కదా సార్ సైన్స్ అనేది తెలిసేది. ఒక లాగ్రాడ్ ఒక హ్యుమానిటీస్ నుంచి వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఏ విధంగా వాళ్ళు దాన్ని NaCl తెలియదు, H2SO4 తెలియదు, HCl అంటే తెలియదు, బేసిక్ గా ఈ కాంబినేషన్స్ దేనికి వాడతారు అంటే కూడా విచిత్రంగా చూస్తారు. అలాంటి సైన్స్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మాట్లాడితే మొత్తం వీడికి తెలుసు అని మళ్ళీ ఉల్టా ప్రాపగండా. సైన్స్ చదువుకున్నోడికి ఖచ్చితంగా తెలుస్తుంది H2SO4 HCl కలిపితే ఏమవుతుంది, NaOH కలిపితే ఏమవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా అది చదివి అది కంప్లీట్ చేసుకుంటేనే కదా గ్రాడ్యుయేషన్ కంప్లీట్ అయ్యేది. ఆ బేసిక్స్ కూడా తెలియని అంటే ఐఎమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ది పర్సన్స్ హూ ఫ్రమ్ హ్యుమానిటేరియన్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కానీ అది జీవితాలను కాపాడదు కదా. జీవితాలను కాపాడే వైరస్ కి సంబంధించి డిజైన్ చేసిన వ్యాక్సిన్స్ ని దాని మీద ప్రపంచం అంతా ఎదురు చూస్తుంటే అవుట్ ఆఫ్ 1/7 స్ట్రెంగ్త్ మనదే. ప్రపంచ జనాభాలో 130 కోట్లు, మోర్ దెన్ 7%, మనం ఉన్నాం. అటువంటిప్పుడు దాన్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళ ముందర ప్లేస్ చేసి అమైకస్ క్యూరీకి కూడా అవకాశం ఇవ్వకపోవడం అనేది, అంటే నేను చనిపోయిన వాళ్ళ బాధలు, చనిపోయిన వాళ్ళ తరఫున, వాళ్ళ కుటుంబాల తరఫున జరిగిన బాధను రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా. ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంట్రెస్ట్ టు డిగ్రేడ్ ఎనీబడి, ఎనీ ఇన్స్టిట్యూషన్, అంతే తప్ప వేరే ఉద్దేశం అయితే ఇక్కడ 100% లేదు. Right. So I'll come back to you. Dr. Sab, as Arunkumar-ji is a leading attorney, he points out the people, the judges without scientific background,
If they don't have, they should at least appoint MS Curie, wherein you can have people from different backgrounds who have absolute knowledge. तो अगर इस तरह होता, वायरस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, रेमडेसिविर क्या है, वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीन्स में क्या है, क्या यह दिया जा सकता है या नहीं, अगर आपको एक विज्ञान के साइंस की बैकग्राउंड हो तो जजेस, या नहीं तो MS क्यूरी के साथ वो लोग अपॉइंट कर सकते थे एक स्पेशल कमेटी. ये दो भी नहीं किया गया, इसीलिए इतनी देर और सब कुछ होने के बाद ये फैसला, ये क्या ये प्रजा हित में है, ये मानव हित में है, क्या सोचते हैं आप? ये एज ए डॉक्टर डबल MD के नाते आप, यू आर ए कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, क्या कम्युनिटी मेडिसिन जो एथिक्स है फॉलो किया गया? ऑडियो डॉक्टर साहब, या बात करिए. You can speak, Doctor. Now see, when you were speaking, they were disturbing you, Arunkumar-ji. Now Dr. Amar Singh Azad, they are disturbing. डॉक्टर साहब आप बात करिए. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. सर जी आपका टर्न. He was ready, actually he was preparing. Stuck అయినట్టు. Yeah, they'll try to do. When you are speaking, when you took some words, there was a disturbance in your audio. Now similarly, when Dr. Azad Sahab is about to speak, till now he was quite visible and his audio, everything was clear. This is what happened. This is why we say, why this panic? Why are you not allowing a proper discussion with evidences? एक सही चर्चा क्यों नहीं होने दे रहे आप? इस तरह हैक क्यों करते हैं आप? डॉक्टर साहब अभी तक सही थे, ऑल ऑफ ए सडन उनका, जब अरुण कुमार बात कर रहे थे एडवोकेट साहब, तब उनको भी इस तरह डिस्टर्ब किया गया. क्या सही समाचार लोगों को नहीं जानी चाहिए? क्या लोगों को सही जानकारी नहीं होनी चाहिए क्या? व्हाट इज दिस? Might be title is itching. ఏ టైటిల్ ఈజ్ ఇచ్చింగ్. సరి అయిన సమాచారం ప్రజలకు ఇవ్వద్దా? ఈ విధంగా హ్యాక్ చేయడంలో ఏమొస్తుంది మీకు? వై ఆర్ యూ ట్రైంగ్ టు డూ ఆల్ దిస్ డర్టీ ట్రిక్స్? డాక్టర్ సాబ్, యువర్ ఆడియో ఈస్ దేర్, యూ కెన్ స్పీక్ సార్. ఆజాద్ సాబ్, आज़ाद साहब, अमर सिंह आज़ाद जी, अब बात करिए सर. आई एम सेंडिंग यू कैमरा रिक्वेस्ट ऑल्सो. स्विच ऑन योर कैमरा. till he comes back. Arunkumar ji, justice denied, justice delayed is justice denied. Is it true or not? Obviously, but whatever the system in judiciary is the persons who is having discretion to isolate the cases, urgency, non-urgency, is to be follow the proverb, justice delayed is justice denied. Obviously justice is denied, particularly in the vaccine cases. Whatever the registry might be, the registry is responsible for the cause of delay in disposing the particular vaccine case is to be answerable. One should raise the question before, one should put forth the question before Parliament also, because the parliamentary democratic process, we are following parliamentary democratic process. 542 MPs are entitled to take up the matter, and the Honorable Speaker is also entitled to take up the matter. At least one MP, Member of Parliament, is entitled to place the issue before the Parliament and is to be brought the changes to the system. ఇటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఉన్న కేసులను పక్కకు పెట్టేసిన తర్వాత ప్రజల కొరకు పనిచేయాల్సిన పార్లమెంటే సుప్రీం. ఇక్కడ జ్యుడిషియరీ కూడా పార్లమెంట్ చెప్పిన చట్టాలను ఇంప్లిమెంట్ జరుగుతున్నాయా లేదా చూడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇక్కడ
ఆ సిస్టమ్ లేకపోవడం, నేను అందుకే మనం అనుకున్నది వ్యాక్సిన్ ఈజ్ నీడెడ్ టు judiciary also లీగల్ to వ్యాక్సిన్. isolate the important cases are not important. అటువంటి వ్యాక్సిన్ లేనందుకే ఈ రోజు ప్రజలందరూ కూడా కోట్ల మంది ప్రజలు వ్యాక్సిన్ తీసుకొని ఇబ్బంది పడుతున్నారు. వాళ్ళ అవసరాల కొరకు, కేవలం వాళ్ళ మెడికల్ కంపెనీల అవసరాల కొరకు జరిగిన కుతంత్రంగా కూడా మనం భావించవచ్చు. మేబీ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఆల్సో ఫిష్ అయి ఉండొచ్చు. Even government of India was also not coming to the rescue. All of a sudden, Prime Minister overnight comes and he announces, no discussion on the floor of the Parliament, Lok Sabha or Assembly. Yeah, Dr. Saab, please. जी सर. Yes, sir. मेरी आवाज ठीक आ रही है? आ रही है, sir. अच्छा, क्या क्या सवाल पूछा था आपने? हम पूछे थे, आप कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट. मैं बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया था काफी देर के लिए. हाँ, तो वही है, कुछ भी नहीं सुना मैंने. जब आपका टर्न आया तो आपको डिस्कनेक्ट किया, जब अरुण कुमार बात कर रहे थे उनको डिस्कनेक्ट कर रही है लोग. यही तो पैनिक अब वापस उनको आ गई. तो ऐसा था डॉक्टर साहब, जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड एक है प्रोवर्ब है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. जब हेल्थ का मामला होता है, ये बोले कि साइंस ग्रेजुएट्स नहीं होने से वहाँ पर हमारे न्यायमूर्ति जो साइंस विज्ञान की भाषा नहीं समझते हैं, तो वहाँ अमिस क्यूरी एक कमेटी भी अपॉइंट कर सकते हैं, जो एक्सपर्ट्स हो फील्ड का, उनको लेके ये जल्दी ये केस को फैसला करने में देख सकते हैं. वहाँ पर एक प्राविधान है वहाँ पर. तो क्या सोचते हैं आप एज ए कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट? आप जैसे लोगों को बुलावा नहीं गया, प्रधानमंत्री रात रात आते हैं, कुछ बताते हैं और कोर्ट्स उसको अंगीकार करते हैं, और जब कोई लोग कोर्ट जाते हैं तो इतनी देर वहाँ ट्रायल होती है, और ये ट्रायल का फलस्वरूप काफ़ी जाने जा चुके हैं, और 2 साल बच्चों की एजुकेशन एजुकेशन हैज़ बीन रूइंड, पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स, एवरीथिंग केम टू स्टैंड स्टिल. और हम जब पूछते वैक्सीन में, टीका में क्या है, हमारा चैनल बंद किया जाता है यूट्यूब और ट्विटर. कम्युनिटी गाइडलाइंस की बात करती है यूट्यूब एंड ट्विटर, और इनको हमारे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है. क्या कम्युनिटी में हम लोग नहीं है क्या? कम्युनिटी में जो लोग देखते हैं वो लोग नहीं है क्या? या अमर सिंह जी. शिवा, मुझे लगता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, वो किसी को बुलाना कोर्ट में ना बुलाना तो अलग बात है. देयर आर प्रोफेशनल बॉडीज जो एपिडेमियोलॉजिस्ट की और कम्युनिटी मेडिसिन वालों की प्रोफेशनल बॉडीज हैं. किसी बॉडी को किसी ने नहीं पूछा. देयर आर लॉट्स ऑफ हेल्थ एक्सपर्ट्स जो अब बोल रहे हैं, एम्स के, और बहुत कुछ बोला उन्होंने, डॉक्टर संजीव ने, क्या नाम उनका, संजय राय. तो वो भी है. हाँ, संजय राय. तो वो आप देखो कि इंडिया की कौन सी कमेटी में, कौन से एक्सपर्ट ग्रुप्स में, कौन से पैनल में इस बात की डिस्कशन हुई. सीधा ऑर्डर आया किसी और कंट्री से, और सीधा अपने देश के ऊपर इम्प्लीमेंट कर दिया गया और ठोस दिया गया, बिना किसी डिस्कशन के, किसी कमेटी के, बिना किसी कोई इवन पार्लियामेंटेरियंस की कोई कमेटी नहीं है. किसी की कुछ तो होता. तो ये तो बिल्कुल मजाक हो गया ना डेमोक्रेसी का. मजाक बना दिया गया डेमोक्रेसी का कि कहीं से कोई कह रहा है, वो भी कौन लोग हैं कौन नहीं है उनकी कोई वेरिफिकेशन नहीं है. वो भी उनके अपने कंट्री में क्या क्या उनका अशर हुआ सेनेट में, जो उसकी जो सारी हियरिंग हुई, और उसके बाद यहाँ तक हुआ कि अमेरिकन स्टेट्स जो वर्टिकली 2 में डिवाइडेड है अब भी. देयर आर स्टेट्स जहाँ पे बहुत रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट है. देयर आर स्टेट्स जहाँ पे काफी टेंस है. तो वहाँ खुद यूनिफॉर्म ओपिनियन नहीं है. एक तो ये बात सोचने वाली है. दूसरी बात ये है कि ये जो जिसको साइंस कहा गया है, विज्ञान कहा गया है, विज्ञान के नाम पे इन लोगों ने इतना भय फैलाया, इतना डर फैलाया, पैनिक फैलाया, और पूरे के पूरे मीडिया को यूज किया, और पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को जैसे इमोशनली, मेंटली और फिजिकली पैरालाइज किया. ये बहुत ही हीनियस किस्म का मैं समझता हूँ कि क्राइम है, जिसको साइंस के नाम पे किया गया. और जिस साइंस के नाम पे किया गया, उस साइंस की एक भी बात
आज तक वेरीफाई नहीं हुई, वो ठीक है। एक भी बात को वो प्रूव नहीं कर पाए कि वो ठीक है। सारी की सारी कहीं ना कहीं बहुत ही शैलो हॉलो assumptions एंड प्रिजम्पशन पे बेस्ड है। कुछ भी ले लो आप, कोई एक इश्यू इनका, मास्क का इश्यू ले लो, ये जो लॉकडाउन का इश्यू ले लो, आप वैक्सीन का इश्यू ले लो, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का इश्यू ले लो, कुछ भी एक सॉलिड साइंस पे बेस्ड नहीं है, साउंड साइंस पे बेस्ड नहीं है। अब इसको बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। जैसे मैंने तो जिस दिन ये हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंस किया था, उसके शायद मुझे लगता है 3-4 दिन बाद ही मैंने ऑन टीवी बोल दिया था कि ये सारे का सारा जो है ये कोई साइंस नहीं है, ये किसी साइंटिफिक पैरामीटर्स पे बिल्कुल ही इसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो ये मुझे लगता है कि कोर्ट से अब जो डिसाइड कर रहे हैं, तो पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया, सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो ये तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्चुनेटली इतना साउंड है कि उसमें ऐसी प्रोविजंस नहीं है कि ये कुछ चीज़ों को चेंज कर सकते हो। तो ये नहीं चेंज कर सके, इसलिए हो रहा है। और उसके उस जजमेंट्स के बावजूद वो जो नीचे ग्राउंड पे जो इम्प्लीमेंटेशन है वो वही हो रही है जो ये लोग चाहते हैं। वो कोई बच्चों को भी टीके लग रहे हैं, पहले भी ऐसे जबरदस्ती टीके लगे, और जो जबरदस्ती टेस्टिंग हुई, और जो जबरदस्ती लोगों को आइसोलेशन सेंटरों में डाला गया, जहाँ पे लोग एक हॉरिफाइंग एनवायरनमेंट था वहाँ पर इतना एनवायरनमेंट ऐसा गंदा था कि वहाँ तो वैसे अच्छा वाला आदमी भी यार वो भी मर जाए। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं जो हुआ है, मुझे नहीं लगता कि कोई जस्ट बाई चांस हुआ है। इसका जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है, और वो जो तरीका है, जो मेथड है जिस ढंग से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ये प्रूव करे कि ये लोग कोई बाई चांस गलती कर रहे हैं। इट्स नॉट ए मिस्टेक, इट्स टोटली प्लान्ड, और एक पर्टिकुलर प्री प्लान्ड एजेंडा के तहत ये सारा कुछ किया गया, और अभी भी किया जा रहा है, और अभी नियर फ्यूचर में किया जाएगा। अभी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि ये लोग बंद करने वाले हैं। अभी इनका एजेंडा काफ़ी बड़ा है इम्प्लीमेंट करने वाला। उसमें जो हम कह रहे हैं कि वो जो उसकी कोलेटरल डैमेजेस हुए, वो एक्चुअली में कोलेटरल डैमेजेस नहीं है, वो एक्चुअली प्लान्ड डैमेजेस है। ये प्लान ही ऐसे किया गया था। स्मॉल स्केल इकोनॉमी को, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने का एजेंडा है। जितने इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिक्शे वाले हैं, रेडी वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, छोटा जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, सबको साइडलाइन करके बड़े बड़े कॉर्पोरेट को सारा हैंडओवर करना। वो आप देख रहे हो कि सारा कुछ हो रहा है। हमारे सब बोलने के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, कोर्टों के फैसलों के बावजूद जो एजेंडा की इम्प्लीमेंटेशन है वो डिट्टो हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये सारे का सारा आगे जो एजेंडा है उसमें आप देखिए, जैसे हम ये इसकी mRNA वैक्सीन की बात करूँ, वो ये अगर तो बहुत लंबा चौड़ा बातें हो सकती है कि इशू को लेके, मास्क को लेके, वैक्सीन को लेके। वो तो मैंने पहले भी बोला था, आप भी बड़े इजीली बोला जा सकता है कि इसका जो मोड ऑफ स्प्रेड है प्रीडोमिनेंटली वो स्मॉल ड्रॉपलेट से होता है, दैट मींस एरोसोल से। जब एरोसोल से होता है तो दैट मींस जनरल एयर में वायरस आ जाती है, उसमें मास्क और लॉकडाउन और ये सारी बकवासबाजी किस तरह होती है। अगर इसका जो मेजर मोड ऑफ स्प्रेड ही स्मॉल ड्रॉपलेट्स हैं, इसको एरोसोल बोलते हैं, तो एरोसोल तो पहले हवा में चला जाता है। एरोसोल डज नॉट, सिर्फ बिग ड्रॉपलेट्स को रोक सकते हो आप मास्क डाल के। बिग ड्रॉपलेट्स इज ए माइनर मोड ऑफ स्प्रेड, और टच इज इवन वेरी रेयर, वेरी रेयर। तो ये जो अगर तो इसी तरह फ्लू वायरस के बारे में वेल नोन एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट का म्यूटेशन रेट इज वेरी हाई। इससे पहले कि आपको ये समझ आए कि ये पेंडेमिक बनने जा रहा है, उससे पहले वो वायरस बदल जाता है, उससे पहले बदल जाता है। बट टू टॉक ऑफ मेकिंग ए वैक्सीन तो बड़ी लंबी बात है। इससे पहले कि आपको समझ आए कि क्या हो रहा है, उससे पहले वो वैक्सीन का नया स्टेज आ जाता है। तो ये नॉन एपिडेमियोलॉजिकल फैक्ट्स है। फिर आप भी ये नया भूत लेके आ गए कि mRNA। अब mRNA कैसे बिहेव करेगा बॉडी में, इसका कोई एविडेंस नहीं है। कोई इसकी जो सेफ्टी है वैक्सीन की, कोई ये नहीं कह सकता कि वैक्सीन इज सेफ। आज तक किसी ने कहा भी नहीं, दे कैन नॉट डेयर टू से कि ये सेफ है, और ये भी नहीं कह सकते कि ये इफेक्टिव है। दोनों बातें हैं।
इफेक्टिव की भी कोई प्रूफ नहीं है और सेफ्टी की भी कोई प्रूफ, और कह भी नहीं सकते ये, क्योंकि mRNA का वैक्सीन तो पहली बार आया है, इसने कैसे बिहेव करना जाके लिविंग, अब लिविंग बीए में कैसे बिहेव करेगा वो डिफरेंट है। अब उसका कंप्यूटर बेस्ड मॉडल तैयार कर दिया आपने कि ऐसे ऐसे बिहेव करेगा, तो वो कंप्यूटर से पूछ के थ्रो करेगा। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ इंस्टेंसेस जहाँ पे ह्यूमन बॉडी में ऑल टुगेदर डिफरेंट बिहेवियर होता है। वीट की मैं उस दिन भी उदाहरण दे रहा था, सिंपल वीट है जिसको सिर्फ हाइब्रिड किया गया है, और उस वीट के इतने ज्यादा रिएक्शंस हो रहे हैं, उनकी एलर्जी इतनी ज्यादा बढ़ गई है सिर्फ उसको हाइब्रिडाइजेशन करने से। और आप उसको बात करते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स कैसे बिहेव करेंगे बॉडी में जाके, नोबडी नोज। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड वैक्सीन है, आप mRNA दे रहे हो, ये सोच के दे रहे हो कि ये वाला mRNA जाके स्पाइक प्रोटीन बनाएगा। कहाँ पे बनाएगा? साइटोप्लाज्म में बनाएगा, न्यूक्लियस में एंटर नहीं करेगा। ये इनको कैसे श्योर है कि ये न्यूक्लियस में एंटर नहीं करेगा? वहाँ पे वो ऐसा बैरियर लगा हुआ है कि ये न्यूक्लियस में एंटर नहीं करेगा। ये ऐसे assumptions है। कंप्यूटर बेस्ड मॉडल पे बेस करके आप पूरी ह्यूमैनिटी को रिस्क में डाल रहे हैं। कल को मान लीजिए ये प्रोटीन कोई और शेप ले जाता है बॉडी में जाके, उसके बायोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कोई पता नहीं। और फिर उसकी नीड क्या है जब इसका, और अब आप देखिए किलर्स कौन से हैं, वही पैरामीटर तो ले लेना, कोई पैरामीटर में सबसे टॉप 10 किलर्स क्या है, सबसे हमें टॉप। Sorry for the disturbance. With enthusiasm, I am asking. May I know the content in the vaccine? Might be distilled. नहीं, ऐसा नहीं। डिस्टिल्ड वाटर होता तो बहुत अच्छा था। It was a happy news. ये खुशी की खबर होती है डिस्टिल्ड वाटर लगाते हैं। ना प्लासिबो। खबर होती है। या 10 किलर्स की बात कर रहे हैं, then you will address your देखो ये इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैसे दिस इज द नंबर 1 किलर इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। टॉप 10 किलर्स में से जो सबसे बड़े 3 किलर्स हैं वो है हार्ट डिजीज, स्ट्रोक्स, एंड थर्ड इज COPD, chronic obstructive pulmonary disease। तीनों नॉन कम्युनिकेबल है, और 75% डेथ जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होती है। आउट ऑफ एवरी 100 डिजीजेस 75 people die because of non communicable diseases, not the communicable diseases, and even in the amongst the communicable diseases चौथे नंबर पे आती है वो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस। दिस वायरस कम्स इन दैट कैटेगरी कि आपको निमोनिया हो सकता है। दैट इज द ओनली रिस्क ना, वो बाकी चीजें तो बड़ी रेयर है, वो जो क्लॉटिंग मैकेनिज्म है और ये वो सबसे कॉमन क्या है आपको वायरल निमोनिया हो सकता है। अब वायरल निमोनिया पहली बात तो बैक्टीरियल भी हो सकता है, वो माइकोप्लाज्मा भी हो सकता है, वो वायरस भी हो सकता है। फिर वायरसेस कितने किस्म की है? 10 किस्म की वायरस मेजर ग्रुप्स हैं जो सेम वायरल निमोनिया कर सकते हैं, 10 किस्म की। और आउट ऑफ ए कोरोना वायरस यू आर टेकिंग जस्ट 1 कोरोना वायरस। अब देखो क्या ये पूरे का पूरा तमाशा हो रहा है। अब जो आप लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की बात भी करते हैं हम लोग, उसमें भी वेल नोन है कि लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में वो लोग मरते हैं जो ऑलरेडी प्री डिस्पोज है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को या एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, जो स्मोकर हैं, जहाँ पे डस्ट बहुत ज्यादा है, जहाँ पे केमिकल फ्यूम्स हैं, जहाँ पे कोई ना कोई इंडस्ट्रियल फ्यूम्स हैं, तो और कम्युनिकेबल डिजीज से जो लोग मरते हैं। ये इसमें भी कहा था ना जो लोग मरे वो कोमोर्बिडिटी से मरे। ये अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोमोर्बिडिटी का क्या मतलब? वही है कोमोर्बिडिटी होगी तो वही व्यक्ति मरेगा। तो कोमोर्बिडिटी को क्यों टारगेट नहीं करते? व्हाई ओनली दिस वायरस? व्हाई वी आर नॉट? अब केसेस की बात ले रहे हैं, जो लेटेस्ट कर रहे हैं, केसेस हो गए। केसेस का क्या मतलब है? इसे शेयर नॉनसेंस, आप लोगों को बेवकूफ बना रहे हो। अब केसेस एक ही वायरस टेस्ट कर रहे हो, अब दूसरे वायरस टेस्ट करो, फिर उसके भी केसेस आ जाएंगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ अदर वायरसेस। पहले जो 2009 से चल रही थी फ्लू, जो स्वाइन फ्लू की वायरस, वो कहाँ गई? वेयर इज दैट वायरस? वो चंद्रमा पे चली गई वो। अब वो टेस्ट नहीं कर रहे, वो नोबडी इज टेस्टिंग। पहले उसका 9 से लेके 19 तक, 10 साल आप 9 से लेके 19 तक आपने 10 साल वायरस।
डॉक्टर साहब कोरोना इतना लेटली नहीं है शायद, इतना क्या नहीं है? कोरोना वायरस इतना लेटल नहीं है शायद, नॉट दैट इसको लीथल। बनाया, लेटल बनाया। अच्छा, लीथल लीथल, अच्छा लीथल। लेटल नहीं नहीं नहीं, वो तो देखो लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर सेइंग, मैं भी कन्विंस्ड हूँ कि ये इसका कुछ है नहीं, कुछ भी इसमें, सिर्फ वो प्रोजेक्शन है, सॉल प्रोजेक्शन। देयर इज नथिंग स्पेशल इन दिस वायरस, कुछ भी इसमें स्पेशल नहीं है। तो पहले भी लोग मरते थे, जो रेस्पिरेटरी फ्लू वायरसेस है, दे वर कॉजिंग 7.5 लाख डेथ्स एवरी ईयर सिंस मेनी इयर्स। पूरी दुनिया में 7.5 लाख लोग मरते थे वायरल मलेरिया से। तो ये तो कोई नई बात नहीं है। मुझे तो अपना बचपन याद है, बचपन में हम लोग अक्सर कहा करते थे, किसी को पूछे ना घर में कोई बुजुर्ग है, उसको बोलते थे कैसे है बुजुर्ग, कैसे है, वो बोलता था ये सर्दियां तो काट गया, अब अगली सर्दी देखेंगे। इसका मतलब सर्दियों में बुजुर्ग लोग ज्यादा मरा करते थे बिकॉज ऑफ द वायरल निमोनिया। ये तो नहीं कुछ बड़ी वेल एस्टेब्लिश बात थी। अक्सर मुझे आज भी याद है, वो बोलेगा, स्टैंडर्ड आंसर होता था, ये सर्दियां तो बुजुर्ग काट गया, बापू काट गया, अगली सर्दी देखेंगे। तो ये वेल नोन फिनोमेना था। अभी गर्मी है, अभी वो वायरसेस जस्ट पॉजिटिव आ रहे हैं, अब वो कुछ कर भी नहीं सकते। वो गर्मियों में तो वो निमोनिया नहीं होते, फिर वायरस पॉजिटिव कैसे? हल्ला किए जा रहे हैं कि केसेस हो गए। अब केसेस का क्या मतलब है? अब 10 वायरस और टेस्ट करने के शुरू कर दो, उसके भी केसेस हो जाएंगे। अब ये देखो क्या मजाक बनाया जा रहा है लोगों को, और हम लोग बन रहे हैं। मुझे इन सरकारों पे तो कोई ज्यादा सोचने, क्योंकि ये तो वही बोली बोलते हैं, वही भाषा बोलते हैं जो इनके आका बोलते हैं। ये आका के यस माय लॉर्ड वाले हैं ये। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एमडीज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो नहीं बोले, वो सबसे बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर वो बोल देते एक बार, मान लीजिए उनको नहीं भी पूछा था, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स जिनको नहीं पूछा गया, जिनको पूछा जाना चाहिए था। तीन तो नेशनल लेवल की एसोसिएशंस हैं एपिडेमियोलॉजिस्ट की, कम्युनिटी मेडिसिन, 3 है, वो एक भी नहीं है। तीनों में से किसी एक को भी पूछा गया, और जितना उन्होंने अपने कहा वो इसके खिलाफ ही कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये भी कहा कि इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद पढ़ा है। तो ये पूरे का पूरा कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मैं तो वैसे बड़ा गंदा सा लफ्ज, और मुझे पंजाबी में हमको बोलते हैं कि इन लोगों ने साइंस को, विज्ञान को कोठे की कंजरी बना दिया। पता नहीं साउथ में क्या कहते हैं इसको। अब इनके लिए साइंस कोई साइंस नहीं है, इसे प्रोस्टिट्यूट। तो जो पैसा दे उसको ले जाए, वो ले जाए। तो ये साइंस है, ये सही है, साइंस को इस लेवल पे ले जाए। ये बहुत ही अफसोस की बात है ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट्स, ऑन बिहाफ ऑफ द साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स। आम लोग जो बेचारा, वो तो बेचारा है, वो तो विक्टिम है, उसको समझ आनी भी नहीं थी, वो समझ सकता भी नहीं, इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सी बात समझ सके। लेकिन जिन लोगों को समझ आ गई या आ जानी चाहिए थी, वो लोग बोले नहीं। तो ऐसा लोगों की ये ग्रेटनेस समझता हूँ आम लोगों की, कि आम लोगों ने उनकी इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा बॉदर नहीं किया। हमारे पंजाब में फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग गांव में किसी ने मास्क नहीं डाली, वेरी बिगिनिंग। मैं शुरू में गांव में जाता रहा हूँ, गांव में कोई मास्क नहीं डालता था, आराम से लाइफ चलती। और शहर में जब आते थे पुलिस से डरते हुए, तो शायद डाल लेते थे, अब कोई नहीं डालता था। अब भी डीसीज ने ऑर्डर कर निकाले हुए हैं कि मास्क पहननी जो कंपलसरी है पब्लिक प्लेसेस पे, लेकिन बाजार में जाओ तो हार्डली 5%, नॉट मोर देन 5% पीपल आर वेयरिंग मास्क। तो ये आम लोग यही कर सकते हैं। ये मैं सकता हूँ, उनको सैल्यूट है कि वो जो ऑर्डर उनको नहीं जचता वो नहीं मानते। कुछ चीज़ें हैं वो माननी पड़ती हैं उनको। वैसे बच्चों को स्कूल में वैक्सीन लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या आप एयरपोर्ट में जाओगे तो लगानी पड़ेगी। अब पंजाब के बहुत सारे लोग बाहर हैं, उनको अपने बच्चों के पास जाना पड़ता है, उनको वैक्सीन लगानी पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बहुत ज्यादती और बहुत जोर जबरदस्ती हो रही है, जो कि नहीं होनी चाहिए। एज ए डॉक्टर कम्युनिटी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सुप्रीम कोर्ट जो है, कोर्ट में जो भी है कानूनी के दौर पर आधार के साथ जाता है। जब आधार बोलते हैं, हम बोलते हैं कि विज्ञान साइंस का तो खूबी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की एक महामारी
कोई साइंस वहाँ पर साइंस की बात करती है तो हमारी यूट्यूब चैनल बंद कर दी जाती है। तो कोर्ट्स में एटलीस्ट न्याय व्यवस्था में आधार के साथ ही फैसला होता है। तो ऐसे फैसले इस विषय में हुआ क्या? नहीं, वो दोनों तो एक ही बात, वो जो फंडामेंटल राइट है ना, कि आपकी बॉडी का, आप मुझे लगता है उस बेस पे किया है कि आपकी बॉडी पे आपका राइट है, कोई जोर जबरदस्ती आपकी बॉडी में कुछ घुसेड़ नहीं सकता। तो वो एक फंडामेंटल राइट है जिसको कोई बदल नहीं सकता, फंडामेंटल राइट है। उसको बदलने के लिए पहले पार्लियामेंट में लेके आओगे आप, 2/3 मेजोरिटी से उसको चेंज करना कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर होता है, मुझे लगता है उसका। तो उस बेस पे वो जो हमारे सीनियर लॉयर्स हैं उन्होंने जीत लिया केस वो। तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि ये लोग फिर भी कुछ ना कुछ इसको मान लेंगे बड़े आराम से, ऐसा तो कुछ लग नहीं रहा। ये कुछ ना कुछ और निकाल लेंगे, कुछ ना कुछ का रास्ता पहले भी निकाल रहे हैं, पहले भी जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। जैसे पूरा आप दिल्ली शहर की कैपिटल में देखो, आप 2-2 हज़ार रुपया फाइन मास्क का होता रहा। आई नो ऑफ पीपल जो 5 लोग कार में बैठे थे बिना मास्क के 10-10 हज़ार रुपया फाइन देके गए। कितना गलत है। देखो, आम आदमी पार्टी या कोई राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी क्या बात करता है, केजरीवाल दिल्ली में फाइन डालता है और वो हिमाचल प्रदेश जाके वहाँ राजनीति करता है। नहीं, इस इशू पे तो कोई डिफरेंस ओपिनियन नहीं है। वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, दे आर वन ऑन दिस इशू। इस इशू में उनको बोलने की उनको उनके आकाओं ने इजाजत नहीं दी। वो वही बोलते हैं जो इजाजत मिलती है। उनके आकाओं ने इस इशू में बोलने की उनको इजाजत नहीं दी। वो इसलिए एक ही बोली, आप आओगे कि वही कांग्रेस बोल रही है, वही बीजेपी बोल रही है, वही ये बोल रही है। और मुझे लगता है लेफ्ट भी बोल रहा है, लेफ्ट भी बोल रहा है। लेकिन कोर्ट में तो इसकी पूछताछ होनी चाहिए ना सर। आधार के साथ कोर्ट ने आगे ले जानी चाहिए ना विज्ञान की बात, कोर्ट तो करनी चाहिए ना। नहीं, पूरा कमीशन बैठना चाहिए इस पे। मैं तो कह रहा हूँ इंटरनेशनल लेवल पे कमीशन बैठना चाहिए कि जो कुछ हुआ क्या इसके साइंटिफिकली वैलिड है ये वो। लेकिन अभी नहीं, कुछ लग नहीं रहा तो ऐसा कुछ कमीशन बैठेगा। नेशनल कंट्री लेवल पे भी देयर शुड बी टॉप साइंटिस्ट का होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर कुछ लोग ओपिनियन दे ही रहे हैं ना। यही अपील ले कि कुछ लोग इसके विपरीत ओपिनियन दे रहे हैं, खिलाफ ओपिनियन दे रहे हैं। अब उसको एक कमीशन बैठाते हैं हम लोग, ये उसका सीनियर सुप्रीम कोर्ट का जज है, ये उसका हेड होगा। और ये वाले जो उल्ट बोल रहे हैं वो वाले भी होंगे, कुछ डॉक्टर साइंटिस्ट, और जो थक में हुए बोल रहे हैं वो भी होंगे। तो दोनों का देनी चाहिए बोलने की प्लेटफॉर्म उस कमीशन के सामने। देयर शुड बी वेरी हाई लेवल कमीशन in the country and even the international level. Why there is not? तो नहीं बढ़ने देंगे वो, आपका YouTube नहीं चलने दे रहे, Facebook नहीं चलने दे रहे, तो कमीशन क्या बढ़ने देंगे वो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। देख ही रहे जो हो रहा है। फिर आता हूँ आपको लास्ट, आपका क्या करना चाहिए लोग और विज्ञान, आपके पास आता हूँ। एक अरुण कुमार जी, नाउ इज वेरी क्लियर दैट फाइनिंग इन दी दिल्ली, नाउ यू हैव सीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया in that conference of PM and CMs, he was not wearing a mask. Prime Minister was wearing a mask, and many were not wearing masks. And when again next day, after Patiala incident, our Honorable Prime Minister was hosting Sikh delegation all of a sudden, and there he doesn't wear. Many of the Sikh delegation, no one was wearing a mask. Then how is that this Aam Aadmi Party government Delhi fining innocent individuals? How can court be silent? He himself was not wearing. Don't they understand what is the logic behind wearing a mask? Why should they wear a mask? What is that which is going to affect you if you don't wear a mask? And why they have not understood that wearing a mask, it will moisten your own moisture. You are breathing your own released carbon dioxide. It is moist, and fungal infections also you may get. And God has given you nostrils to breathe fresh air. Through air you get oxygen. Don't you think these courts will have this simple understanding? If the governments, all political parties as claimed by Mr. Azad, are sold out now, they are being dictated shamelessly in a democracy, then don't you think courts should come? Because courts go by evidences. Court can always call for evidence. Might be our leaders, top leaders, completed their medicine within 2 years from internet, and personalized developed virus and personalized developed vaccines are enriched our leaders in medical technology, medical and engineering technology. They are aware
with the incidents and the impacts and sidetracking the state exchequer. Obviously, we can say whatever the things happened in 2 years was designed in somewhere else, somebody else brains to sidetrack the entire world radius. దాన్ని ఏమంటారు, ఆ వలయాన్ని తప్పించిండ్రు, ప్రపంచాన్ని వేరే ట్రాక్ లకు తీసుకెళ్ళిపోయిండ్రు. Recession, it was going through recession. It was going through recession, no jobs, recession, prices were rising, people were dying because of various other things, promises not meant across the globe, all political parties. So suddenly they changed. They used their brains as remote controls. They controlled each and everything. They controlled 700 plus crores of people. Dozen are a gross of brains control the entire population of world, including World Worst Health Organization. Obviously దాన్ని అట్లా డిజైన్ చేసిండ్రనైతే నేనైతే భావిస్తున్నా అదే జరిగింది వాస్తవం. ఏదో రోజు నిజం బయటికి రాక తప్పదు. ఆ రోజు వచ్చిన రోజు విచిత్రమైన విషయం ఏంటంటే they brought changes net lo they brought all the organs of the system into internet except parliament and assembly. వాళ్ళు దాన్ని మాత్రమే ఎందుకు తీసుకురాలేదు అనేది కూడా విచిత్రం. పార్లమెంట్ సెషన్స్ కూడా ఆన్లైన్ లో చేయొచ్చు ఇఫ్ దే కమిటెడ్. వేల మందితోన ఇంటరాక్షన్స్ చేస్తున్నారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వై డోంట్ దే ఆర్గనైజ్ డే ఆన్లైన్ మీటింగ్ in parliament, introduce in parliament for parliament session. 542 మంది ఎంపీలను ఒక చోటికి తీసుకురావడానికి ఒక చిన్న సిస్టమ్ సరిపోద్ది. మేబీ విత్ స్పెండింగ్ ఆఫ్ 2 to 3 lakhs, దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. అందరికి సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయి, అందరికి హైటెక్ సెల్ ఫోన్లు, ల్యాప్టాప్లు. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియానే వాళ్ళ టెలిఫోన్ బిల్స్ కూడా పే చేస్తుంది. అటువంటప్పుడు వాళ్ళని ఎవరాపిండ్రు అనేది విచిత్రమైన విషయం. ప్రజలందరినీ కూడా మనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని వాలెట్ లో చేయమన్నారు ఇంటర్నెట్ లో. మరి వీళ్ళ పేమెంట్స్ మాత్రం మళ్ళీ సేమ్ టైం సాలరీస్ అన్ని కూడా అన్ని ఆటోమేటిక్ గా హై అండ్ టెక్నాలజీతో ట్రాన్స్ఫర్ చేసిండ్రు. సాలరీస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావచ్చు, మినిస్టర్స్ కావచ్చు, ఎమ్మెల్యేస్ కి, ఎంపీస్ కి, ఎమ్మెల్సీస్ కి అందరికి కూడా హైటెక్ టెక్నాలజీతో సాలరీస్ ట్రాన్స్ఫర్ అయినాయి. కానీ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ ని కన్సాలిడేట్ చేయడానికి కానీ, ఎక్కడైనా కానీ విజువలైజ్ చేయడానికి కానీ, గెట్ టుగెదర్ చేయడానికి కూడా ఎందుకు పనికిరాలనేది ఒక విచిత్రమైన విషయం. ఈ విషయంలో జ్యుడిషియరీలో కూడా వ్యాక్సిన్ లోపించినందుకు జ్యుడిషియరీ కూడా ఇంటర్ఫియర్ కాలేదు. జ్యుడిషియరీ కెన్ ఆస్క్ ద పార్లమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా, వై డోంట్ యూ పీపుల్ గెట్ టుగెదర్ ఇన్ ఇంటర్నెట్ అనే మాట కూడా ఎక్కడ రాలేదు. ఇంత ప్రపంచాన్ని మొత్తం శాసించిన వైరస్, ప్రపంచాన్ని వైరస్ శాసించలేదు, వైరస్ ని ప్రపంచాన్ని శాసించే విధంగా డిజైన్ చేసిండ్రు. 200%, 1000% చనిపోయిన వాళ్ళందరి తరఫున మాట్లాడాలి అంటే, వాళ్ళ కుటుంబాల తరఫున వాళ్ళ బాధను షేర్ చేసుకుంటూ మాట్లాడాలంటే జరిగింది వాస్తవం. మైట్ బి ఇట్స్ బిట్టర్, చేదు నిజం ఇది. ఒక జనరేషన్ ఇది, ఎవరైనా రెస్పాన్సిబుల్ అయినా సరే, మైట్ బి పూనావాలా, లేదు తెలంగాణకి సంబంధించిన బయోటెక్ కంపెనీ, ఏదైనా సరే వాళ్ళ చేష్టలు, వాళ్ళ వికృత చేష్టలు, వాళ్ళ ఆర్థిక మూలాలను పెంచుకోవడానికి వాళ్ళ స్టేట్ ఎక్స్చెక్కర్ ద్వారా తెలివిగా ప్రజల నుంచి కాకుండా స్ట్రైట్ ఫ్రమ్ ఇండియన్ ట్రెజరీ గ్రేట్ మొత్తాన్ని వాళ్ళు శాసించే విధంగా వాళ్ళ శాంపుల్స్ ని, వాళ్ళ వ్యాక్సిన్ కొరకు ప్రపంచాన్నంతా క్యూలో నిలబెట్టుకునే తాహత్కి మన డ్రగ్ ఇండస్ట్రీ పెరిగిపోయిందంటే, డ్రగ్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ బాస్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. డెఫినెట్ గా ఈ రోజు వాళ్ళు ప్రపంచాన్నే శాసించింది. Don't you think even Supreme Court also fell into that league? You mean to say? Not allowing proper trials to go on, evidence-based trials? Maybe yes.
షుడ్ బి ఎస్ అనే పరిస్థితి లేదు. మేబీ ఎస్. షుడ్ బి ఎస్ అనే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి మేబీ ఎస్. యా డాక్టర్ సార్. देखो अगर 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 कंट्रीज की गवर्नमेंट्स जो है दे हैव फॉलन इन लाइन, जुडिशरी अपने ढंग से दे हैव फॉलन इन लाइन, उनका ढंग है. दे कांट फॉल इन लाइन 100% बिकॉज दे आर द लास्ट होप ऑफ द पीपल. अगर अगर they want that people should have some hope, because once the people become hopeless then they become dangerous people. So I think courts have by and large fallen in line. तो courts की कोई अगर theoretically वो decide कर भी रहे हैं तो practically उनके decisions का कोई खास मतलब नहीं निकल रहा, कोई खास मतलब निकल और टाइमली नहीं निकल रहा है. जो आपने बात कही कि लेट इज जस्टिस राइट, तो अगर बात इतनी लेट जाके बात होती भी है उसका कुछ मतलब नहीं खास. तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी इसको कहा जा सकता है कि बाय एंड लार्ज जो जुडिशियल सिस्टम है वो भी हम ये नहीं कह सकते कि दे हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ द टाइम. तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट्स की का जो हशर हुआ, जो कुछ हाल है उनका, तो कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी हुई. तो क्या करना चाहिए जब लोग दिल्ली में फिर डराया जा रहा और सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया कल, अब लोग क्या करनी चाहिए? वही है, वो हरियाणा में जो जनपद सेट की उन लोगों ने जो ये कर रहे हैं ये लोग साहिल और गांव जाके इस चीज को कर रहे हैं, ये सेट एन एग्जांपल. मुझे लगता है वही रास्ता है और तो रास्ता शायद कोई बचा नहीं है. कि और बाकी जो हम लोग कर रहे हैं ये भी उसी का ही पार्ट है. तो अवेयर पीपल आर द आंसर. डॉक्टर साहब, sorry for the interruption. With great enthusiasm, I am asking a question, sir. Wearing a mask is obviously damages the autoimmune system of a particular person. Is it so? नहीं, वो तो बाद की बात है कि उसकी हार्म्स क्या है. पहले तो उसकी यूटिलिटी ही नहीं है कोई. अब किसी चीज की यूटिलिटी है तो ही उसका हम करें ना भी, उसका रिस्क कितना है तो उसका फायदा इतना है. फायदा ही नहीं कोई. There's no, because low level exposure to viruses is good for health. Because आप अगर सडनली किसी बहुत एक्यूट पेशेंट के पास जाओगे और बहुत बड़ा एक्सपोजर होगा तो उससे अच्छा है आपको जनरल एक्सपोजर होना चाहिए. rather you should go to the people. अभी तो उल्टा कर रहे हैं लोग कह रहे हैं कि let the people be exposed so that they get immune, because to save yourself from viruses like the flu viruses, the only door open is increase your immunity. There's no second door. I'm very clear about it. There's no second door. कोई और रास्ता नहीं है. ना तो मास्क पहनना, ना लॉकडाउन करना, ना कोई ये सारी जो कुछ हो रहा है इसके नाम पे सख्ती जो शासन और हो रहा है, और ना उसका कोई ट्रीटमेंट है ढंग का. आप एक ही तरीका का वायरस म्यूटेशंस भी मल्टीपल हो गया, मिलियंस ऑफ म्यूटेशंस भी हो गया पर्टिकुलर वायरस का. हो गया. वो the very nature of the virus is such, because आप देखो ना हर होस्ट में जाके वायरस ने मान लीजिए आपसे मुझ में एक वायरस पहुंचा है तो वो मेरे डीएनए को यूज करके मल्टीप्लाई करेगा. अब मुझसे जब बाहर जाएगा तो वो वही वायरस रह गया. The virus has used my DNA to multiply. Now my DNA is part of that virus. Now once that virus comes out of me, there's a changed virus. It's as simple as that. और उसकी मल्टीप्लिकेशन, उसकी स्प्रेड इतनी क्विक है कि आप उसके म्यूटेशन को रोक ही नहीं सकते. कोई नहीं, जो मर्जी सांस ले आइए, they cannot prevent the mutation of the fast spreading respiratory viruses. कोई उसका तरीका नहीं है. This is all sheer nonsense, shit, bullshit. अगर कोई कहता है कि मैं वैक्सीन बढ़ा लूंगा फ्लू वायरस की, नहीं बन सकती है. Because there are large number of flu viruses, number one, and their mutation is so big. Mutation is so big. इस करके ये तो ऐसे फालतू की बात है. 2 साल से कितने म्यूटेशंस होंगे सर? मिलियंस ऑफ म्यूटेशंस. मैं हर होस्ट में जब गुजर जाएगा वो वायरस, तो वो वायरस नया वायरस.
5 में, 10 में, 15 में, 20 में जब गुजरेगा तो छोटी चेंजेस होती है, बड़ी चेंज हो जाएगी, कॉम्पिटिशन हो गई वो। स्मॉल चेंजेस जानने के लिए मेडिकल एक्सपीरियंस, मेडिकल नॉलेज इज मैंडेटरी है ना सर। एटलीस्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ म्यूटेशंस, इट इज मैंडेटरी टू नो ए पर्सन टू गो थ्रू द म्यूटेशन कोर्स, एटलीस्ट सब्जेक्ट, म्यूटेशन सब्जेक्ट। Without the knowledge, how can anybody exercise the particular case? It is impossible, I think. नहीं, वो तो ठीक बोल रहे हो आप, लेकिन ये लोग तो करते हैं, इनका एक ही तरीका है, एक झूठ को बोलते जाओ 100 बार बोलो, 200 बार बोलो, 500 बार बोलो, वो सच चलेगा। हिटलर के चले हैं ये सब लोग, झूठ बोलते जाओ वो सच लगता है। बस कोई किसी साइंस की जरूरत नहीं है, किसी फैक्ट की जरूरत नहीं है। नॉनसेंस हो गया साइंस, ये साइंस नॉनसेंस हो गया। साइंस है। तो आप पीडीएफ सबसे, या सर बोलिए। अब पहले तो वो कहते थे ना कि ये वहम है, ये भूत प्रेत ये सब है। अब ये साइंस भूत प्रेत हो गई है, साइंस है बिगेस्ट भूत प्रेत। Now you are a pediatrician. You are a pediatrician and a community medicine specialist. Now how do you look at this delayed justice of Supreme Court? Even children were being inoculated. Children को डर लगा है, डरा के दमा के उनको और वैक्सीन दिया जा रहा है। और schools, educational institutions are supposed to impart education. How can they sell or promote vaccine from their schools or educational institution? Don't you think their recognition should be removed? They should not be allowed to impart education. ये लोग शुरू में ये खुद तो कह रहे थे बच्चों को कुछ नहीं कहता, अब बच्चों को कहने लगा। शुरू में कह रहे थे ना कि बच्चों को तो कुछ नहीं कहता, फर्स्ट फेज सेकंड फेज में ये कहते थे कि बच्चे तो सेफ है ना, बच्चों में हुआ कुछ नहीं। अब बच्चों को क्या खतरा हो गया? सिंपल सा सवाल को पूछो कि आप पहले तो कहते थे बच्चों को कुछ नहीं होता, अब बच्चों को क्यों लगा रहे हो वैक्सीन? आप नहीं, क्योंकि बच्चों को लगाना है, क्योंकि उनका कोई एजेंडा होगा, इसमें हिडन एजेंडा होगा कोई। या वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो गई है बिलियंस में, अब उसको एक्सपायरी डेट है उसको खत्म करना है, कुछ ना कुछ तो एजेंडा होगा ही ना। ये तो है, एक एजेंडा तो ऑब्वियस है ही है। अगर कोई वैक्सीन आप तैयार कर लेते हो, अब लगता है कि वो, तो फिर क्या करोगे? जबरदस्ती लगाओगे? और एक बात सर, और एक बात डॉक्टर साहब, ये जानकारी ज़रूरी है नहीं वैक्सीन में क्या है। आप हमारे वैक्सीन मेरे शरीर में आप मैं बताता हूँ। बायोटेक कंपनी का, एक मिनट साहब, बायोटेक कंपनी का मूसी ईसी का पानी है, नेचुरल स्प्रिंग का पानी है। अदर पूना वाला का कंपनी का गोदावरी का स्टार्टिंग नेचुरल स्प्रिंग्स वाटर है पूना का, उतना ही है, कुछ भी नहीं है उसमें। क्योंकि जब हम वैक्सीन साइड इफेक्ट्स की बात करें तब ये लोग चालबाजू से प्लासिबो भी दे सकते हैं, क्योंकि ट्रायल मोड में है ना, कैंडिडेट वैक्सीन रह सकता है और प्लासिबो भी रह सकता है उसमें। और जब लोगों को जानकारी जाने लगी तब ये बताने के लिए कि देखो ये वैक्सीन देने के भी कुछ नहीं हो रहा इनको, लेकिन आप लोग ये भी नहीं समझ नहीं रहे कि ये हमारा पैसा है और ये वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं है। 99.9% जो है रिकवर होते हैं ऑन देयर ओन। ये कोरोना, व्हेन सच इज़ द फिगर फ्रॉम वर्ल्ड वाइड, फैटलिटी रेट भी देखते हैं ना सर, कितने लोग मर रहे हैं ये डिजीज़ से, तभी बोलते हैं ना इसको वैक्सीन की ज़रूरत है, प्रिवेंशन की। और हॉस्पिटल में कितने एडमिशन्स हॉस्पिटल में हुए, और इसको निर्धारण कैसा करना सर? ऑटोप्सी और पोस्टमार्टम ही है ना। नहीं, वो तो ठीक है, ऑटोप्सी पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए अगर आपको कुछ कहना है कुछ तो। लेकिन सवाल ये है कि कुछ डिफरेंस तो आए ना। एक जो लोग मर रहे हैं वो उसका कोई प्रूफ तो हो कि वो ज्यादा मर रहे हैं। पहली बात तो वो तो ज्यादा मर ही रहे। दूसरी बात, ज्यादा मर रहे हैं तो उसको आप ज्यादा नंबर कैसे शो कर रहे हैं? पूरे का पूरा उसके पूरा का पूरा एविडेंस आ गया। तो कैसे रोड साइड एक्सीडेंट को भी उसमें डाल दिया गया पॉजिटिव केसेस में। अभी आप जितने हॉस्पिटल में मरीज जाएंगे उसको आप टेस्ट कर रहे हो, एक ही बार इसका टेस्ट कर रहे हो, जो भी उसका पॉजिटिव आ जाएगा वो उसका तो उससे बढ़ गया। अब ये पैरामीटर है इनके पास। अब उसकी जरूरत पोस्टमार्टम इज ए वेरी कॉस्टली बिजनेस। पहले पोस्टमार्टम करोगे, फिर उसकी वायरल कल्चर करोगे,
ये इतनी कंट्री की या नेचुरल रिसोर्स अपनी रिसोर्सेज वेस्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे फालतू मास वैक्सीन ही मास टेस्टिंग करने का क्या फायदा आपको? ये जो RT-PCR हुआ है इतने मास का बेनिफिट है, जिसका नहीं हुआ वो जिसको जुकाम हो जाए, जिसने टेस्ट नहीं करवाया उसको जुकाम है, जिसने टेस्ट करवा लिया उसको कोरोना है। ये तो ऐसा हर व्यक्ति को वही वायरस हुई है। मैंने तो आसपास में देखा सारे ना, कोई फैमिली तो ऐसी बची हो जिसमें 2-3 कम से कम 50% ऑफ द पेशेंट जो फैमिली मेंबर है वो अफेक्ट ना हुए। जिन्होंने तो टेस्ट करवा लिया वो तो कोरोना डरे भी हो और दाखिल भी हो, सब कुछ हुआ, उन्होंने नहीं टेस्ट करवाया वो जुकाम है। मेरे पास तो आसपास पूरे ये सारा का सारा मजाक बना हुआ है। तो आप ये चाहते हैं कि इवन जुडिशरी में विज्ञान जो साइंस के एटलीस्ट उनको जो जानकारी हो ऐसे लोग वहाँ पर, या नहीं तो एटलीस्ट अमिकस क्यूरी ऐसा एक कमेटी अपॉइंट करनी चाहिए, क्योंकि ये स्वास्थ्य का मामला निजी का लाइफ तो इसके लिए तो बहुत बड़ा कमीशन होना चाहिए। जो वो अमिकस क्यूरी वाले तो इंडिविजुअल केस में या छोटे मोटे केस में होती है ना, ये तो पूरी ह्यूमैनिटी का एक इश्यू है, जैसे पूरे कंट्री का इश्यू है। इसमें बहुत बड़ा कमीशन होना चाहिए। वो कमीशन वेरीफाई करे कि जो कुछ ये हो रहा है इसमें साइंस कितनी है, फिक्शन कितनी है, अजम्पशन कितनी है, जम्पशन कितनी है और विज्ञान कितना है, ये तो डिसाइड होना चाहिए ना। ये कंट्री के लोगों का हक है, उनका फंडामेंटल राइट है कि उनको पता होना चाहिए कि इतना बड़ा जो हंगामा हो रहा है उसका आधार तो होना चाहिए। फंडामेंटल राइट तो ये भी लोगों का कि इतना बड़ा हंगामा हो रहा है, इतने हमको टीके लग रहे हैं, हमको ट्रीटमेंट मिल रही है, हमको डराया जा रहा है, डरा के घरों में घुसेड़ दिया जा रहा है, तो उसके लिए हमारा ये तो फंडामेंटल राइट है कि हमको ट्रू इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके लिए कोई मिशन बैठे बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग हो बैठे, वो पूरा रेगुलर है, जैसे कोई पार्लियामेंट बैठती है, कोई बड़े तो उसमें रेगुलर सिटिंग हो, डेली डे टू डे सिटिंग हो, डे टू डे हियरिंग हो, सबकी बात सुनी जाए। क्यों नहीं करते? करनी चाहिए। हक है लोगों का, 140 करोड़ लोगों का हक है, उनको सच्चाई चाहिए। वो बेचारे अपने लेवल पे अपनी जो इन्फॉर्मेशन इधर उधर से मिल जाती है उसको इसके बेस पे वो डिसीजन लेते हैं। कोई बेचारा you are there, Arunkumar garu. Your voice is being heard, but you are, as he rightly says, there should be a independent commission and court should monitor it, and it should be on a regular basis. They should hear every citizen. That is a wonderful, only then there will be science and truth and freedom can be saved. Before we go, Arunkumar ji, now Supreme Court gives at last it comes, because there is so many things, people have been having divergent views about this. There is a hidden agenda which we are going to again unleash tomorrow. That's a different issue. But after giving this discussion, and after the federal court of US removing mask mandate for even transport, international, national, all transports, and the federal court coming out, federal judge coming out, nothing doing, Pfizer, come on, reveal after effects. Now so many deaths were there, so many side effects were there. When such is the case, that is also, the America controls WHO. When American Supreme Courts are working so well, why is it Indian Supreme Court not understanding this? And that too again in Delhi, this mask mandate and fines. Don't you think Supreme Court now should interfere and said nothing, nonsense? Why are you again creating this panic? Where is science? Give us the evidence. Can't Supreme Court ask them, or Delhi High Court ask them? Yes, Arunkumar ji. जब अरुण कुमार साहब की बारी आती है तो उनको बंद करते थे, जब आपकी बारी आती है आप बोलिए सर। पंजाब में भी डिप्टी कमिश्नर्स ने ऑर्डर कर दिए हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे मास्क पहनना कंपल्सरी है। तो ये आम आदमी पार्टी को जिताना गलत हुआ। आज पंजाब को आम आदमी पार्टी को जिताना गलत, क्योंकि वहां पर भी दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी को किसी ने नहीं जिताया, किसने जिताया? आम आदमी पार्टी को नहीं वोट पड़ी है। वे जो पुराना गंदगी इकट्ठी हुई थी या कूड़ा करकट था जो पुरानी पार्टियों का, उसको साफ किया लोगों ने। आम आदमी पार्टी को वोट नहीं पड़े, ये पुराने वाली पार्टियों के खिलाफ वोट पड़े। आम आदमी पार्टी को वोट आप देखेंगे 2027 में जो पड़ेंगे, 22 में आम आदमी पार्टी को वोट बिल्कुल नहीं पड़ा। दूसरी पुरानी वाली पार्टियों को साफ करना था, इसलिए उन्होंने इनको जिता दिया। तो बट एक ही एजेंडा है ना, दिल्ली और पंजाब में एक ही एजेंडा है। अब लोग जानकार हुए या नहीं, लोग और डरे हुए हैं क्या? अगर इस तरह के ऑर्डर देने से लोग मान जाएंगे क्या? सबूत नहीं पूछ
डीसीज के ऑर्डर के बावजूद मेरे तो बाजार में कभी किसी 5% लोग भी मास्क नहीं पहनते। बाजार इज ए बिगेस्ट पब्लिक प्लेस, इससे बड़ी पब्लिक प्लेस तो नहीं हो सकती ना। जो रश वाले एरियाज हैं, बाजार है, वहाँ शॉपिंग हो रही, सब कुछ हो रहा है, वहाँ पे 5% के ऊपर लोगों ने मास्क नहीं पहना। एटलीस्ट नाउ आमाद 5% वो लोग हैं, या वो 5% वो लोग हैं जो मेंटली अभी डरे हुए हैं, जिनके घर में कोई केस हो गया, वो दाखिल होना पड़ा उनको, वो डरे हुए हैं। वो डर जाते हैं जब लोग, तो फिर वो फिर से वो डर की मेमोरी ऑफ फियर, उसकी वजह से पहन रहे हैं। So 5% are those memory with the memory, they are trying to do this. They are wearing, only the people who are fearful, who have lost someone in their houses, they are 5% wearing masks. Aam Aadmi Party Kejriwal, you have to understand, this is not going to work with you. You are trying to create another fear or panic in Delhi as well as in Punjab. Kindly show us. We invite you to the show. You kindly debate with us. Why this fear psychosis? Where is the virus? Did you isolate the virus, Mr. Kejriwal? Did your government or your health body? You have vaccinated people. You created fear and panic. You have vaccinated. What happened to that vaccination? Your own Delhi serological studies were done in case of children and general public. It clearly came out. Herd immunity is there, natural immunity. And not only that, Mr. Kejriwal and Punjab Chief Minister, you have to answer to the people. During the first and second wave, entire Punjab, Haryana and Delhi borders, UP borders, people were there, riots, farmers were there, agitating for against the farm laws. How many farmers were affected? Come on, take the case study. Then you will speak science. Now at least I hope Supreme Court, Delhi High Court, Punjab High Court also have got a lot to do when it comes to right to life, right to health. With no information is provided, genuine information, again creating fear or panic, again going for lockdowns like China. They are trying to, who is controlling, who is funding these governments, political parties? That should come out. Don't you think, Azad sir? Farmers they should take it as a case study. At the peak of the virus, so-called second virus stage and all, second wave, so many thousands of farmers were there. Why farmers only? Recently they have fought the election. इनकी रैलीज में किसी ने मास्क नहीं डाला हुआ था. केजरीवाल also. अब एक महीने के बाद क्या हो गया? कहाँ से आ गया? तब जो रैली जब होती तब वायरस कहाँ था? तब तो वायरस वही था. Yeah. वायरस कहीं जो वायरस 2019 से आया है, तो वो समाज में ही है, वही चला थोड़ा गया कहीं. अब ये कहते 2002 साल तो हो गया अभी वायरस को आए हुए. अब वायरस तो उसके बाद वायरस फ्लू वायरस spreads within few months throughout the world. Within few months. आज तो 2 साल हो गए इनको. अब 2 साल में वायरस कोई ढूंढता फिर रहा है किसी को. वायरस इज पार्ट ऑफ अस. वायरस इज पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अस. उसमें नए वायरसेस आते रहते हैं. थोड़ी बहुत कोई जुकाम हुआ, कोई खांसी लगी, तो ये होता रहता है. पहले भी हजारों सालों से होता था, अब भी होता रहेगा सर. तो ये फिर फालतू का रन अरुण कुमार साहब का ये हो गया. तो अब सीधा एक मैसेज देनी चाहिए हम आम आदमी पार्टी और हर एक पॉलिटिकल पार्टी को. जब इलेक्शंस होते वायरस नहीं रहता, लोग भी जानकार हो जाइए. जब इलेक्शंस होते कोई वायरस नहीं रहता, मास्क नहीं, कोई मैंडेट नहीं, कुछ भी नहीं. इलेक्शंस जैसे ही ख़त्म होते ही, जब बच्चे स्कूल जाना शुरू हो जाते हैं, फिर वायरस आता है. जब लोग बाहर जाना शुरू होता है, वायरस आता है. इसीलिए लोग जानकार हो जाइए. आपको सही समाचार देने की हम कोशिश कर रहे हैं. आप पूछिए, प्रश्न कीजिए, वायरस कहाँ है और मैंडेट, ये मास्क मैंडेट क्यों वापस आया, इतनी ज़बरदस्ती आप क्यों कर रहे हैं. आम आदमी पार्टी जहाँ भी है, दिल्ली हो या पंजाब, ये शुरू हुआ. आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में हंगामा, जब वो लोग पंजाब आते और उत्तर प्रदेश इलेक्शंस होते, केजरीवाल कुछ नहीं होता वहाँ. और देखिए फिर हिमाचल प्रदेश गए, वहाँ कुछ नहीं होता उनको. और इतनी बड़ी भीड़ प्रधानमंत्री ऑफिस में, सिख की डेलीगेशन, कोई मास्क ज़्यादा लोग पहने नहीं थे वहाँ. फिर वहाँ कुछ नहीं हुआ केजरीवाल जी. और वहाँ CMs के साथ मीटिंग हुआ, खुद CGI, he was not wearing a mask, Mr. Kejriwal. Then how is that common man will all of a sudden will get affected? This Supreme Court and High Court should take it suo moto. They should take, because courts go by evidence. They should demand and get the evidence from these governments who are trying to impose their will on the people, creating fear psychosis. Children lost their education. People lost their lives, precious lives. They lost their employment. They have created fear psychosis.
See, that is why even still some people are wearing masks, even when if that is serious and sincere, we are demanding Kejriwal and Punjab CM. Which disease is more dangerous and fatal to Indians? Is it corona or TB, malaria, dengue, malnutrition? Which disease is more dangerous? Did you do any scientific validation? Whether autopsy or postmortem report, presenting symptoms, why you gave the treatment? कुछ तो होना चाहिए. ऑल ऑफ अ सडन आप क्यों ये डर पैदा कर रहे हो? आप जो भी स्टेट्स हो, क्यों डर पैदा कर रहे हो? कितने लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए, कितने लोग मर गए, क्या ट्रीटमेंट दिया, क्या उसकी विज्ञान के दौर पर आपने कोई आधार से ये किया है? बिना उसके क्यों डराते हो? और लोग को जानकार होनी चाहिए. लोग, आपका लाइफ, आपका जिंदगी आपके हाथ में. यस अरुण कुमार जी, आर यू देयर? उनको बंद किया गया. अरुण कुमार जी, सर, last word from you. Don't you think court should now interfere without further delay? Again, the mask drama and all this thing is going on. Don't you think courts have responsibility now? They should not take so much of time as they have delivered in the vaccine case. I'll call him and जब आप बात करते हो साहब, आपका टर्न आता है, आपको बंद कर देते हैं लोग. Hack sir, they have hacked. Arunkumar Garu, before we go, you speak in this only. Now, don't you think High Court and Supreme Court now should intervene regarding the latest mask drama which is going on, fines and all? Now, don't you think court suo motu should demand this government as to why there was no virus during elections, why there was no virus when the festivals were happening, why there was no virus when bilateral meetings happen? All of a sudden, from where did this virus come, and why mask mandate? Don't you think courts should take it suo motu? They should not delay as they have done in the case of vaccine. Even the lower judiciary functions are also having ample power, discretion and jurisdiction also. Why? Because jurisdiction might cause lakhs of people in high work. So, in the same fashion, Supreme Court of India is also, High Court is also having ample power to intervene in this matter and direct the government of India and direct the particular government of state also. Yeah. So you mean to say they have direct power? All courts have power to intervene? Obviously, having power and can exercise, can direct the government to design the modality and further direct the government to follow the particular modality. Yeah, they can always demand for evidences, no? Why again all of a sudden? Exactly. At this juncture, with the help of this judgment, one can find a case to know what is the content containing in the ampoules of vaccine. Yeah. What does the vaccines contain? They can always demand. Court also they can demand. People also can demand now. Exactly. Right. सुने ना साहब, आजाद साहब, सुनाई दिया आपको? जी जी जी, नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है. तो जब सरकार इस तरह की आगे डर पैदा करने की कोशिश करते हैं तो कोर्ट्स को इन्वॉल्व होनी चाहिए और लोग भी डिमांड कर सकते हैं मैं मास्क क्यों पहनूं और ये वैक्सीन टीका में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद. बिल्कुल पूछना चाहिए, ये सवाल वैलिड है. हमारी बॉडी का मसला है, हमारे बच्चों का मसला, हमारी भविष्य की जो जनरेशन है उसका मसला है. कल को पता नहीं इस टीके में क्या निकलना है, क्या नहीं निकलना, क्या उसका कॉन्सिक्वेंसेस होने हैं. ये लिविंग बीइंग में जा रहा है, ये टीका भी लाइव है और लिविंग बीइंग में जा रहा है, दोनों लाइव है.
दोनों लाइफ कैसे एक्शन रिएक्शन करेंगे कुछ नहीं पता। तो इट्स वंडरफुल। इतनी मास लेवल पे वैक्सीनेशन करने के लिए तो बिल्कुल प्रूव्ड सेफ वैक्सीन होना चाहिए। अगर करना भी हो तो जो अभी तो कुछ भी प्रूव नहीं है, ये खुद भी कहते हैं प्रूव नहीं है, खुद भी क्लेम नहीं करते, ना एफिकेसी के बारे में क्लेम है ना सेफ्टी के बारे में क्लेम। तो लगाना बस वो टीका ही रहता है कि सबको टीका लगा देना और लगाते जाना, फिर हर बार बूस्टर पता नहीं कहाँ खत्म होगा। ये नया कुछ है ना सारे, इसे न्यू फिनोमेना, नई बातें हैं। नो, ये भी बता चुके हैं सीरम इंस्टीट्यूट वाला पूना वाला, ये बता रहा है कि इतने वैक्सीन मेरे बच गए, और वो बोलता है कि आप नए नेक्स्ट बूस्टर, हम उसको एक्सपोज किया तब से चुप बैठ गया वो। तो एक वैक्सीन मैन्युफैक्चरर इस तरह दबाव डाल के सरकार के ऊपर क्या ये वैक्सीन दिया जाता है क्या? ये साइंस है, विज्ञान है। और जिस तरह दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी जो कर रही है दिल्ली और पंजाब में, डर पैदा करो, फिर मास्क लाओ, लॉकडाउन लाओ, फिर ये वैक्सीन जो पूना वाला जो बोला मेरा वैक्सीन बचे हुए है मैं क्या करूं, तो इस तरह सरकार चलती है क्या? सब नहीं है आपके। Is this legal, Arun Kumar garu? Can this be allowed by courts? It is an official statement. I have protested that. I have even put it in public domain. He says so many doses of vaccine is lying. And he was asking another booster. It is a public news, sir. Don't you think court should... I am ready. If is there any financier to accommodate me to file a case, myself I am ready to know the content of the vaccine through Supreme Court of India. Wonderful. By gathering all this information, literature from the court, I am ready to file a petition with regard to the content of this vaccine. Ingredients used to prepare the vaccine. Azad sahab, you should take the lead. You have organizations. ये तो ज़रूरी बात है. We should demand no what these vaccines contain. तब पूरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाता. क्या बोलते हैं आप? ये होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। और देखिए बोलने वाले बहुत थोड़े हैं ना लोग, प्रॉब्लम ये है बोलने वाले बहुत थोड़े हैं, आम लोगों के ने अपना डिफेंस निकाल लिया है। अब देखते हैं ये जो सबसे सेंसिटिव मसला है स्कूलों में जो वैक्सीन लगने हैं, ये पता नहीं कितने लोग एक्सेप्ट करेंगे। ये पता नहीं, ये पता चलेगा जब लगेंगे। एज ए पीडियाट्रिशियन क्या आप मानते हैं कि वैक्सीन बच्चों को ये ऐसे वायरस जो 99.9% कुछ नहीं होगा, और जो बच्चों को ऑलरेडी इम्यूनिटी आ गया, फर्स्ट वेव सेकंड वेव, उनके वही फैमिलीज के साथ ही थे बच्चे, हर्ड इम्यूनिटी उनको, नेचुरल इम्यूनिटी है उनको, ऐसे ज़रूरत है क्या? कोई साइंस ही नहीं है इसमें, कोई विज्ञान ही नहीं। साइंस की ज़रूरत की तो दूर बात दूर की है, नो साइंस है। There is no science at all. I hope Supreme Court and High Courts are listening. क्या सर? जबरदस्ती है या कोई विज्ञान साइंस ही नहीं है? I hope Supreme Court and High Courts are listening. He is a man with MD-Paediatrics and MD Community Medicine. Did you contact such type of people? The Supreme Court and High Court at least now come to the rescue of the people. An humble request to you. Judiciary is the last hope. Otherwise, people will start losing in people participatory constitutional democracy. If they start losing faith, then what will happen? Kindly understand my humble request to all lower courts, to all say High Court and Supreme Court. You have that jurisdiction, personal liberty, right to life. It is in your domain, and these are all acts pertaining to fundamental rights. Sovereign, very sovereign to a country. WHO and all cannot interfere. So I would sincerely hope, right from magistrate court to Supreme Court, everyone will play their own role now. How again they are trying to create this fear psychosis in the form of mask mandates by Aam Aadmi Party government in Delhi and Punjab and some other states. All this again trying to create a fear psychosis as they have done. I hope Supreme Court should come out now openly, taking all the cases suo moto, and justice delayed is justice denied.
You need evidences, Supreme Court. Why don't you question when you are investing my money for under emergency use authorization, when you are investing my money to pay compensation, why Supreme Court is not demanding evidences? Why should one wear masks? What does these vaccines contain? Why do you need a vaccine for a disease which has got 99.9% recovery on their own? How is that rallies, elections after elections, festivals, cinema releases, new cinema, IPL matches, Supreme Court, nothing happens to anyone. Bilateral meetings, just they have created panic in Delhi so that Modi could get all these foreign delegates to Gujarat for the elections. Don't you look at the scenario, Supreme Court and High Courts? Is it not a political game? I don't blame Modi. Congress, Rahul Gandhi advises booster. Aam Aadmi Party, you see what they are doing. All the other political parties in the power, Tamil Nadu or Karnataka, you have seen what they are doing in Kerala also. Why don't Supreme Court or High Courts intervene and ask for evidence? When it comes to right to life, right to health, it is my life, my health, and I should know why you are locking me down, why I should wear a mask, why should I need a vaccine, and how long it will go on, why my children or myself I am losing my education, why I am losing my daily income, why I am being made to become more and more fearful. Which disease is fatal, dangerous disease for Indians? Is it corona, TB, malaria, dengue? Where is the scientific validation? Supreme Court has to give it, autopsy or whatever it is. Without that, how can you pay compensation instead of insurance companies paying that amount? If they are dying because of comorbidities or others, it is an insurance company. So this is for today. I only hope people will become more and more knowledgeable. They will start questioning. Then the beauty of people participatory constitutional democracy remains. This is for today. We'll come up with the latest tomorrow again. For all the Indians, Sukhanidra Shubharatri. For the world over, good morning, good afternoon, good evening. It is a wake-up call. Federal courts in US doing something. Supreme Court at last coming with something, whether it is sufficient or not. And again, these mandates of fear which are going on, will courts at least now do not delay their decision making by accepting all those suo motu and start delivering judgments based on evidences. That is what we always believe. Court has the last hope. When media trying to create fear, when political parties doing the same, then it is left to the judiciary. And then people, I only hope people will understand, people would speak science, then the truth will come out so that their freedom to survive, to live is assured forever. Thank you very much, Azad sir. Good night.